Okay, so I continue this topic now. Understand very carefully. The diagram is lost now, actually, because with every meeting the diagram got gone lost. Listen very carefully. जो first now मुझे बुक में लिखा होगा इसमें कि as the image goes on forming up, they lost they lost their shine, they lost their brightness. So how and why they lost their brightness? What happens with them that they lost their brightness, and what is the principle behind that? See, what happens is that I told you that time, whenever light is being refracted, it distributed in two parts. उसका दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है. One part is refracted back, and the other part is reflected. So लाइट का मेजॉरिटी पार्ट तो रिफ्रैक्ट होता है और लेसर पार्ट रिफ्लेक्ट होता है. द फर्स्ट आई एम मेकिंग अ डायग्राम हियर. ऐसे मान लीजिए ये फर्स्ट लाइट है. क्या होगा उसका लेसर पार्ट रिफ्रैक्ट होगा और मेजॉरिटी पार्ट रिफ्लेक्ट लेसर पार्ट रिफ्लेक्ट होगा, मेजॉरिटी पार्ट मीडियम के अंदर चला जाएगा रिफ्रैक्ट होकर. ये तो ट्रांसपेरेंट सरफेस है ही नहीं, ये तो पॉलिश सरफेस है. जितनी लाइट यहां पर आ रही है, जो लाइट यहां पर आ रही है, he is doing it. उतनी की उतनी all the light is reflected back. Now this ray will form the first image. Now understand this. Now this contains maximum light from here, है ना? जब इसका रिफ्रैक्शन होगा अभी यहां पर, तो फिर से क्या होगा, इसका स्प्लिट होगा पार्ट में. लेसर पार्ट रिफ्लेक्ट होगा, मेजॉरिटी पार्ट बाहर चला जाएगा. ये सेकंड इमर्जेंट रे है और ये ही सेकंड इमेज को प्रोड्यूस करती है. अब आगे फर्दर ऑलमोस्ट ऑल द लाइट इज देयर इन दिस. जो थर्ड रे बनती है वो इस लाइट से बनती है जो वैसे ही डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो पहले से ही बहुत कम है. सो ऑल दीज आर वेरी लेसर नाउ. तो जो भी थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ और सिक्स इमेज बनती रहती हैं वो बेसिकली लेसर लाइट से बन रही होती हैं. तो उनकी इंटेंसिटी कम होती जाती है, उनकी ब्राइटनेस कम होती जाती है. सेकंड इमेज इज द ब्राइटेस्ट. In the book somewhere it is written, this ray is then partially refracted. The ray of light falls on the surface LM of the mirror. A small part of light is reflected in the direction BP, confirming a faint virtual image A1. But a larger part, understand this, but a larger part of light, nearly 96% of refracted along BB dash inside the glass. This ray is now strongly reflected back by silvered surface PN inside glass along as B dash C. This ray is then partially refracted along CQ in air and partially reflected from the virtual image A2. The image A2 is the brightest image because it is due to the light suffering a strong first reflection at the silvered surface PN. यही जो सेकंड रे है,
जिसमें मैक्सिमम पोर्शन कलेक्टेड है लाइट का, वो ही लाइट को क्या करता है बच्चों, वही सेकंड इमेज को फॉर्म करता है। इसलिए सेकंड इमेज ब्राइटेस्ट होती है और बाकी सारी इमेज बाय एंड बाय क्या होती जाती हैं, क्या होती जाती हैं, फेंट होती जाती हैं। फेंट होती जाती हैं। इज दैट क्लियर? Yes, सब sir. बताइए। Yes, sir. एनी पॉइंट इज नॉट क्लियर टू यू इन दिस? कोई ऐसा पॉइंट जो क्लियर ना हो आपको, प्लीज टेल मी, please tell me any one point is not clear to you. Is that done? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay. So Yes, sir. basically जो फर्स्ट टॉपिक है चैप्टर का वो हमने मैक्सिमम कवर अप कर लिया है इससे बच्चों। एक टॉपिक रह गया है, मैं आपको बता देता हूँ। वो तो इम्पोर्टेंट टॉपिक भी नहीं है ना, इससे उसकी इंपॉर्टेंस हमारे लिए थियोरेटिकल, वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है एक। दिस वन या यहाँ से बच्चों, आई एम रबिंग दिस ऑल। आप लोगों ने कितना एक्सरसाइज का काम कर लिया? Total question 18. Total 18 To 18 questions. Sir, 18 question. Up to 18 question. Okay, fine. I'll discuss it just now. We'll discuss it. Okay. Now I'm just saying a short application, short brief description of this topic. It's not very important just because it is there. We are doing it. Now, first of all, we're trying to explain we're trying to verify the laws of refraction just wait bachcho. Yeah, we're trying to verify the laws of refraction through experimental principles. So what we do and how to do that. So we have got two laws of refraction, you all know. The first one is, kaun sunaega mujhko? The incident ray, the refracted ray, Incident the ray, normal the and the point of incidence all lie on the same and the place. point of incidence all lie on the same plane. Right. Or lie on the same plane. Perfectly correct. So it is all about the second law basically, which says that sin I upon sin R equals to constant and it is equals to the refractive index of second medium is the first medium. हमको उस पर emphasize करना है इसको explain करने के लिए. So what we do is that we take a rectangular piece of paper on a white sheet of paper, fix on a drawing board and draw a boundary line PQRS with a pencil as shown in the figure 4.6. Block को हटा देते हैं और we take a point O near the middle of the surface PQ and draw a normal NOM going across the block. Okay, draw a line AO inclined at the angle I. Angle I जो this line. This is the incident light. और इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? I है। इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस I के बराबर है। So we draw a line AO inclined at the angle of 40 degree to a normal NOM. Place the block exactly on its boundary line. Fix two pins A and B. Fix two pins. Replace two pins A and B. A and B on the line OA. ठीक है बच्चों? Yes, sir. Replace the block on the boundaries. Fix two pins A and B.
on the line AO and observe these two pins from the other surface. From here. हमको जहां कहीं भी वो पिंस दिखाई पड़ती हैं वहां पर हम 2 डॉट लगा देते हैं ऐसे और ब्लॉक को फिर से वहां से हटा देते हैं. जब ब्लॉक को हटाएंगे हम एंड देन वी जॉइन दिस पॉइंट B and point O. Right? Remove the pins one by one and mark the positions of each pin with a fine pencil dots. Remove the block and join the points C and D with a line BC to meet the boundary lines RS at point B. Join the points A and B by a straight line which gives the path of light ray incident inside the glass block. Here, AO represents the incident ray, OB the refracted ray through the block, and BC the emergent ray. NOM is a normal at the point of incidence O. Angle AON is the angle of incidence I, and BOM is the angle of refraction R. Measure angle I and R, read the values of sin I and sin R from the sine table, and calculate the ratio sin I upon sin R. This ratio is constant and it gives the refractive index of the glass. ये रेशियो एक कांस्टेंट होता है और ये हमको RI की वैल्यू देता है. हम इसको एक बार दोबारा करते हैं with a different value of angle of incidence. ऐसा हम एटलीस्ट 3 बार करके देखते हैं और 3 बार करने के बाद हम ये फाइंड आउट करते हैं कि अगर हमारे पास वैल्यू ऑफ sin I upon sin R सेम आती है तो हमने एक बार एंगल ऑफ I को 40 लिया, एक बार उसको 45 ले लिया, एक बार उसको 35 ले लिया, एक बार 60 ले लिया. हम अलग अलग एंगल्स ऑफ इंसिडेंस कवर अप करते जाते हैं और सबके लिए एंगल R की वैल्यू निकालते हैं. sin I अपॉन sin R की वैल्यू कैसी आती है? हमेशा कांस्टेंट आती रहती हैं. This shows that for a given pair of media, the ratio of sin of I to sin of R bears a constant ratio, and that is called as the Snell's law. This ratio is also known as the refractive index of second medium with respect to the first medium. First medium. That is what we are doing in this question. यही हम इस क्वेश्चन में करने की कोशिश कर रहे हैं. कौन-कौन समझ गया इस बात को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Right. That is what the purpose of this this segment is. The second page पे उन्होंने एक और रिवीजन दिखाया है. वो थोड़ा सा न्यूमेरिकल डेरिवेशन है. मैं बता देता हूँ कैसे होगा. This is the alternate method. Although this is the practical we do the labs also. Here. This method. This method. This all. ये हमको अच्छो दोबारा करना है इसमें. What they are doing is that I need a diagram again. So I take it back on the same diagram. Here. We draw. We draw a circle here with center O. With center O, we draw this circle. And from जहां पर ये सर्कल कट कर रहा है इंसिडेंट रे को एंड रिफ्रैक्टेड रे को, वहां से नॉर्मल के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया हमने. कैन यू सी दैट? बोलिए. Yes, sir. Let us see. Yes, sir. Little bigger. Yes, sir. Now. Oh, sorry. Now. Here. Sit on a circle here. This circle. D इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप. You got two triangles now. DFO and OGE. DFO and OGE, they are two triangles. अब ट्राइंगल DFO के अंदर साइन थीटा का रेशियो लगाते हैं. साइन थीटा कितना आएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज.
है ना बच्चों? That is DF upon OD. Clear? सब बोलिए. Yes, sir. फिर Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes. the other triangle OGE. In triangle OGE, we again apply formula of sine theta, perpendicular upon hypotenuse in sine theta, and we got perpendicular is GE upon OE, right? Now I एक बार sin I लगेगा, Yes, sir. first triangle में sin I लगेगा, second triangle में sin R होगा. आप sin I and sin R का रेशियो निकाल लेते हैं. sin I and sin R का रेशियो निकालने पर वो किसके इक्वल हो जाता है? वो म्यू के इक्वल हो जाता है. क्योंकि जब हम रेशियो बनाएंगे तो OD और OE तो कट जाएंगे, वो तो आपके रेडियस सर्कल के हैं. तो क्या आ जाएगा? sin I upon sin R equals to DF upon GE. सीधा proof of the book again. Sin I upon sin R is equal to DF upon EG. Understand? वो हमारे पास कितना आ जाएगा बच्चों? DF upon EG के इक्वल आ जाएगा. हम डिफरेंट तो हमने क्या निकाल लिया? हमने sin I और sin R का रेशियो निकाल लिया इन अ वे. हम डिफरेंट एंगल्स को यूज करते हैं और sin I और sin R की डिफरेंट वैल्यूज के लिए हम डिफरेंट वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं. वी विल सी दैट जो रेशियो आएगा DF और GE का वो कैसा हो जाएगा? वो सेम आएगा हर बार. दिस शोज दैट the ratio or the refractive index of a medium of a given pair of medium remain constant for different values of angle I. Understand? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Right. Yes, sir. That was Yes, sir. the remaining topic of this chapter. Now tell me till here, till this topic A. किसी को मुझसे कोई बात भी पूछनी है? Any point is not clear to you? Please ask me right now. बोलिए. Any doubt you have anywhere? No? No, sir. No, sir. No, sir. Okay. No, sir. Okay, fine then. So I'm taking the exercise now. Exercise number 8 निकालिए सब लोग. एक्सरसाइज नंबर ए निकालिए और एक्सरसाइज नंबर ए के क्वेश्चंस वन बाय वन डिस्कस करिए मेरे संग बैठकर. जिन्होंने कर लिए चेक योर आंसर्स, जिन्होंने नहीं किए वो राइट द आंसर्स. So first question, I'm taking a changing the screen now. I'm taking a simple word because इसका काम तो अभी हो गया हमारे पास. Right. The first question. Okay. The first question. एक्सरसाइज कौन सी कर रहे हैं हम? फोर्थ एक्सरसाइज कर रहे हैं. Fourth day, sir. Fourth. Sir, fourth day. Fourth day. बताइए किस किस का फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? सबने ये कर लिया होगा आई गेस. कोई इशू नहीं है इस पे करने. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ये तो हो ही गया होगा सबका. Yes, sir. Yes. Fine. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Then the second case. The second question. The diagram to show the refraction of light from air to glass and from glass to air. In each of the diagram, label the incident ray, refracted ray, the angle of incidence. Now, diagram number, mark the question, the diagram in the book. Diagram number 4.1, It's a 4.2. right? 4.1 and 4.2. So mark कर लीजिए. Diagram number 4.1 and 4.2. Then
Third question. A ray of light is incident normally on a plain glass slab. What would be the angle of refraction? 0 degree. Zero. Zero degrees. Angle of degree. incidence, Refraction is Degree. equals to angle of angle of deviation, Zero incidence degree. zero equals to degree. 0 degree. 0 degree. Fourth Zero question. degree. 0 degree. An obliquely incident light ray bends. हो गया वो खत्म. An obliquely incident light ray bends at surface due to change in speed when passing from one to another medium. The ray does not bend when it is incident normally. What will the ray have different speed in other medium? Yes, लिखिए. Yes, sir. Yes, sir. When the medium changes its speed, the light also changes. लिखिए. Since light enters बस बोलिए और क्या. Since light ray enters the second medium with different density, the light ray will have different speed. Fifth question. The cause of light, refraction of light when it passes from one, लिखिए, the change of speed of light when it passes from one medium to the another Ananda. while passing from one medium To another. to another medium. Is called now it's a reason. Yes, sir. Right? बस ये इसका आंसर हो जाएगा बच्चों. Question number 6. Light ray suffers refraction and reflection at the boundary in the passing from air to water. Draw a neat level draw diagram to show it. वीडियो करें draw from air to water मतलब कि Air to denser medium. Air to denser medium. Where to Yes, denser sir. medium. Refracted ray will bend that towards means from normal. air to denser medium. Bend towards the normal. Light ray will bend towards the normal. डायग्राम बनाना है मुझसे पूछ कोई नहीं रहा है आपसे. डायग्राम बनाइए. डायग्राम नंबर ये 4.1. डायग्राम नंबर 4.1 बनाइए. Sir, done. They're done. We're done. Okay. Then next कौन सा है बोलिए. Question number 7. Seventh question, sir. क्वेश्चन नंबर 7 बोलिए क्या है. Ray of light passes from Ray of medium light 1 to passes medium from 2. medium one Which of the following quantities of the refracted ray will differ from that of incident ray? देखिए Speed, light changes its intensity and wavelength.
speed, intensity, and wavelength changes while frequency remains same. Insane. Is that fine? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. yes, sir. नेक्स्ट करिए. स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बुक में लिखा हुआ है, सबका हो गया होगा मेरे ख्याल से. Yes, Yes, sir. sir. Ninth Yes, question. sir. Define the term Ri of medium can be less than 1. लिखिए. Refractive index of a medium can never be less than 1 because whenever light enters from vacuum into the medium, light always suffers decrease of speed and thus the absolute refractive index of the medium is always more than 1. ठीक है. Sir. So can we write like this? No, it cannot be less than 1. As the light travels fastest in air or vacuum, the velocity 3 into 10 to the power 8 meter per second. I don't know, जो बोलो वो लिखिए. Okay, sir. 10th question. Compare the speed of light of wavelength 4000 angstrom and 8000 angstrom in vacuum. Compare the speed of light of wavelength 4000 angstrom and 8000 angstrom in vacuum. So लिखिए बच्चों. In vacuum, light rays of all the wavelength travels at the same speed. In vacuum, light rays of all the wavelength travels at the same speed. So the ratio of velocity is 1:1. ठीक है. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Second sir. one. The second part. Compare this. How's the refractive index of medium related to the speed of light in it in the vacuum or air? The Ri of medium related to the speed of light in vacuum in air or air. How is the Ri of a medium related to the speed of light? बोलिए बच्चों लिखिए. Ri of medium equals to
बोलो क्या होगा बच्चों? Speed of light in air. Speed of light in vacuum upon The speed of light in that medium. Medium. Speed of light in medium. Velocity of light in medium. Okay. Then the 11th question. Light ray passes from water to air and glass in each case. So how does the speed of light change? When light ray passes from water to air, when light ray passes from water to air, the speed of light decreases because light rays travels from denser to rare medium. While when light ray passes from water to glass, its speed decreases because glass is more optically denser than water. Because glass is more optically denser than water. Understand? Yes, sir. Fine. This was question number कौन सा? 12th. 11. 11. Okay, the 12th question. 11. Do it quickly now. Meeting is about to be over in 5 minutes now. A light ray in passing from water to a medium speeds up, slows down. In each case, give the example of medium. State whether the refractive index of the medium is equal to, less than, or more than refractive index of the water. Copy लिखिए. When light ray speeds up, when light ray speeds up, when light ray speeds up, the refractive index of the medium is lesser than the refractive index of water. फिर लिखिए, when light ray slows down, from water to air, from water to the medium, the refractive index of medium is more than refractive index of water. फिर B part का आंसर. Give the example of medium. क्या water to air, पहले में क्या water to air कर लीजिए और water to glass कर लीजिए दूसरे वाले में. Speed of water to air slows down water to glass. Fine. Now I am stopping it here today. It's almost time. आपके क्वेश्चन रह गए बच्चों, उसमें 28 क्वेश्चंस हैं, 29 क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के. Try to solve all these questions. Try to write all these questions in your book today, in your answer sheet today. आपको उसका assignment भेजूंगा आज शाम तक. And try to draw all these diagram in the copy properly using pencil. Don't use pen and don't draw rough diagrams. I would like to see the diagrams drawn properly using pencil and scale in the copy. Understand? Yes, sir. So Yes, don't sir. do it Yes, just sir. like that. Yes, sir.
Don't do it just like that. Do it properly. I will check the answers and tomorrow again. मतलब कल भी फिजिक्स पढ़ेंगे और कल एक्सरसाइज पूरी करने के बाद then I will go on to the math subject. Okay? Yes, sir. Okay, sir. Fine. Yes, sir. Tomorrow. Goodbye. Yes, sir. Yes, sir. Excuse me, sir. हाँ बोलिए सर बायो के टेस्ट के सॉल्यूशंस कब आएंगे? बेटा ये तो बैच टेस्ट हुआ है आ जाएंगे डोंट वरी ओके मैं विल सेंड यू टेस्ट कब हुआ है आपका Yesterday. कल हुआ था. कल हुआ था राइट आज पहुंच जानी चाहिए ठीक है Yes, sir. फाइन Yes, sir. बाय बच्चों Okay, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Yes, sir.